Good afternoon. Today we will see about the Arduino IDE. We will wait for 1 minute for other students, then we'll start our today's class. At that, we will revise our previous session. You can mute yourself. In previous session, we have seen microprocessor, microcontroller. Microprocessor is the heart of CPU. It is the heart of computer system, and microcontroller is heart of embedded system, because in microcontroller program is predefined, but in microprocessor program is defined by users. It will not define at the start. It means what we can do मैम changes. Yeah. आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, बट मैं तो माइक मतलब हेडफोन यूज कर रही हूँ, फिर भी कम आ रहा है। हाँ, बहुत कम आ रहा है। Now you can mute yourself. Okay. So in we have seen microprocessor, microcontroller. Microcontroller में जो होता है प्रोग्राम प्री डिफाइंड नहीं हो, माइक्रोकंट्रोलर में प्रोग्राम जो होता है प्री डिफाइंड होता है, बट इन माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम इज नॉट प्री डिफाइंड. We can do changes, but in microcontroller there is no need to do change. Program is predefined. If you compare in the size, if you compare in the cost, as compared to the microprocessor, size of microcontroller and the cost is less, because in microcontroller input output peripherals and the memories are inbuilt, but in microprocessor we have to give external peripherals, we have to give memories externally. It means what, हमें वहाँ पे मेमोरीज जो भी लगता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, जो कम्युनिकेशंस करने के लिए हमें जो पेरिफेरल चाहिए, वी हैव टू गिव एक्सटर्नली, बट ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें इनबिल्ट होता है. दैट्स व्हाई इन Arduino वी आर यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर. देन वी हैव सीन अबाउट द Arduino बोर्ड. कल हमने बोर्ड के बारे में पढ़ा था. We have seen that board. If you see, we are using here Arduino Uno board, in which there is a Atmega 328 28 pins microcontroller is used. We are using Arduino Uno board because it is easily available and it is very famous. We are using Arduino Uno board in which there is a voltage regulator, there is a digital pins, 14 pins होता है digitals, और analog pin जो होते हैं 6. There will be MCQ test for unit 1 in next week. Then you have to pay attention to the each and every pin which we are using in Arduino board and the steps which we are doing in a Arduino IDE, because on this concept I have given lots of questions, and these questions will be asked in exam also, and I have just provided the assignment. You guys have to submit that assignment before 21st October. So in this we have seen, this is the, if you see one number, this is the power USB. It means what, we are giving here connection to the desktop. That's why we are calling it is the USB cable. And if you see this pin number, we are using here power supply. We are giving directly AC power supply from the our main supply to the Arduino board, and we are connecting this board to the Arduino IDE. It means what? To the desktop, because we are writing the program online on a software, and we are supposed to derive the output on this Arduino board. We are using here LED indicator to show there is power or not. Then we are using, this is the microcontroller. These are the analog pins, these are digital pins. We are using here reset pins, and we are giving here 3-volt and 5-volt power supply, because some components of Arduino boards are compatible with 3-volt, but some are not compatible. They require more than 3.3 volt. That's why we are giving here 5-volt supply also. We are using here voltage regulator to regulate the voltage. This is the Arduino board. Now we will start our today's class, in which we have to see about the software. We have to study about the Arduino instruction development environment.
if you see, when you will open the Arduino IDE, firstly it will open as a blank sketch where you can start to write the program immediately, or you can open the previous file. जो प्रीवियस फाइल उसमें पहले से दिए हुए हैं वो तुम ओपन कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम्हें जो नया प्रोग्राम लिखना है यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट, बिकॉज Arduino IDE इज वेरी सिंपल. There is no requirement of that much background with a programming language, because Arduino IDE is compatible with any C language, C++, any language you can use here. You can use Java also, because in Java commands and instructions are directly provided. You just have to select the command which we require. Firstly, what we have to do when we are writing the program, at that time we have to configure the board and port setting. जो यहाँ पे USB है, हमारा USB port जो है, we have to connect that port with our PC where we are writing the program. हमको वो connect करना है. Then first we should configure the board and port setting to allow us to upload the code. It means what? When you are selecting here port, ये जो tool option होता है, I have just given here the one स्क्रीनशॉट ऑफ द ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर, बट जो हमने प्रीवियस सेशन देखे हैं उसमें मैंने बताया है ये जो मेनू बार होता है ऊपर का, इन मेनू बार वी कैन राइट प्रोग्राम बाय फाइल, वी कैन एडिट प्रीवियस फाइल, वी कैन सिलेक्ट हियर टूल, वी कैन टेक एनी हेल्प if you are facing any difficulty. तो ये जो tool होता है, we have to select which board we are using, then we have to select which port we are using, and that port will be visible in the left corner at the bottom. यहाँ पे वो बोर्ड का तुमको जो पोर्ट यूज कर रहे हैं that will be visible to you, but तुमको कहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये टूल बार में से. And at that time you have to select baud rate as a 9600 Hz. हम क्या कर रहे हैं, पहले Arduino बोर्ड जो है हम हमारे पीसी को कनेक्ट कर रहे हैं. Then what we have to do, connect your Arduino board to the PC by using USB cable. You have to select the port in the Arduino software which we are using. Then you have to select the port of that port. Then you have to set the baud rate as a 9600 Hz. After you download and open the software, it will look like a blank image. This will look like this image. Here, if you see, Arduino IDE is divided into 3 parts. This is the menu bar, this is the text editor, and this is the output pane. In the menu bar, we can write the files, we can open the files, we can make the changes, we can compile the files here. ये जो मेनू बार है, यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन का जो फर्स्ट सिंबल होता है सर्कल में, we can verify, we can compile, we can make new file, we can open file, we can save. ये जो arrow है राइट साइड में जो दिया हुआ है सेकेंड, we can save the file. This is the menu bar. In text editor we have to write the program. So how we will write? Firstly, we will know the structure of the Arduino sketch. So the Arduino sketch is divided into 2 parts. These are nothing but preparation block and the execution block. And this Arduino program is divided into 3 main parts, where structure, this is nothing but where we are writing the program. कैसे लिख रहे हैं? Initially what we will do? Initially we will decide which is input, which is output. We will do in structure, we will do preparation block. मतलब जो हमें प्रिपेयर करना है, कौन सा हमारा पोर्ट इनपुट है, कौन सा हमारा पोर्ट आउटपुट है, we will do these things in a structure. Then we are using values. It means what? We are using the values like data type. We are using byte value, or we are using long value, we are using word value, float value. हमने already data type we have seen in the previous session. Okay, then what we have to do? We have to use here functions. And which functions we are using? We are using 2 main functions. These setup functions and the loop function. सेटअप फंक्शन मैंने यहाँ पे एस कैपिटल लिखा है, बट जब तुम प्रोग्राम में लिखोगे यू कांट राइट कैपिटल एस, बिकॉज यू हैव टू यूज ओनली लोअर केसेस.
बट कुछ इनपुट आउटपुट पिन है जो हमें आज पढ़ना है, जैसे कि डिजिटल राइट, डिजिटल रीड। उसमें क्या होता है, पहला जो वर्ड है डिजिटल, वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, बट उसके साथ हम दूसरा वर्ड लिख रहे हैं, तो हमें वो नहीं समझेगा कि वो अलग वर्ड है। वी विल not able to read that word easily. That's why जो second word होता है, we have to write as a capital letter. मतलब जैसे डिजिटल राइट रहेगा, तो डिजिटल का स्पेलिंग मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगी, और राइट का जो फर्स्ट इनिशियल लेटर है, आई विल राइट इन अ कैपिटल लेटर। बट यदि तुम डी भी कैपिटल में लिखोगे तो देयर विल बी कंपाइलर एरर। तो तुम्हारा जो कोड है, in MCQs exam also, I will give one program and there will be one compiler error you have to find. वहाँ पे कहीं हो सकता है कि मैंने पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, मैंने पैरेंथेसिस यूज किया है। कहीं हो सकता है कि सेटअप फंक्शंस को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, या फिर मैंने कोई और मतलब मिस्टेक लिखा हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट एरर, दैट कंपाइलर एरर। सो यू हैव टू फोकस विच these variables, these functions, how we have to write. We have to write these functions by using lower cases, and we have to give this parenthesis only with respect to function, or we are giving any input. जैसे हम इंटीजर्स में वैल्यूज दे रहे हैं, उसके बाद यदि हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम वी कैन यूज, अदरवाइज यू कैंट यूज दिस ओपन एंड close parenthesis. So our Arduino sketch is divided into main three parts. There is a structure. Structure means जो यहाँ पे हम program लिख रहे हैं. Then constant and variable which we are using in our program. ये structure में हम जो constant variables use कर रहे हैं, जो data types use कर रहे हैं. And third one is nothing but the functions. These are the main functions we are writing at the start of preparation block and at the start of execution block. We will write at the start of preparation block setup function, and setup function is called as sketch start. It means what? When we will write the setup function, at that time your program will start. Until that your program will not start. There will be error, because setup function is the main function in our programming. It is the preparation block, and this setup function will run only once after each power up or a reset of Arduino board. जैसे कि हमारा लेक्चर, कल का ही लेक्चर, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो जैसे रिसेट हो जाता है एट दैट टाइम, और यू आर रिसेटिंग द ऑर्डिनो बोर्ड। जो ऑर्डिनो पिन जो है, यहाँ पे हमारे पास जो रिसेट पिन है, हम ये रिसेट करते हैं ना यहाँ पे, by using these pins we are resetting 5 number और 17 number का पिन से हम रिसेट करते हैं ना। when we are resetting, or if there is a power change, it means what? when we are giving a power, at that time only setup function will run. Setup function will run once, and after execution of setup function, execution will goes to the loop function. As Arduino finishes with code in a setup, it will move to the loop function, and this loop function will execute continuously again and again until reset will happen, or we will cut off the power and we will get our required data. Until that time, loop functions will get executed. समझ में आ रहा है? हम लूप फंक्शन कब यूज कर रहे हैं? सेटअप फंक्शन फिनिश होने के बाद इसमें लूप में जो भी लिखा हुआ रहेगा, लूप स्टेटमेंट में जो भी, ये लूप फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे, दैट विल एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन। जैसे तुम्हारा एलईडी ग्लो हो रहा है, बंद हो रहा है, ग्लो हो रहा है, बंद हो रहा है, तुम उसमें कुछ डिले दोगे तो इट विल कंटिन्यूअसली डू द सेम फंक्शंस। इट यू आर नॉट रिसेटिंग योर बोर्ड, और यू आर नॉट मेकिंग पावर ऑफ। जब तक तुम पावर बंद नहीं करोगे, तब तक लूप फंक्शन कंटिन्यूअसली रन होते रहेगा। Now we will see which we are using the statements in the Arduino structure. We are using the conditional statement. Conditional means if we are giving any condition, and if the condition is true or condition is false, what will happen? These conditions are used as decision making structure.
This structure will require that program specify one or more conditions to be tested by the program. If means if we are using only if statement, if condition is true at that time only, the statement written after if will be executed, and if the condition will false, it will goes to, ये जो स्टेटमेंट रहेंगे इफ के बाद लिखे हुए, that will not execute. This statement will skip and it will goes to the end of this statement. And if we are giving if else means we are giving here two statements. If statement is wrong, then it will goes to the else statement. And if else statement is true and if it's false, that time execution of statement which are written in the else block. else के बाद जो statement लिखा है, this statement will get executed, and the statement which have written in a condition block, that will not get executed. And if we are giving two conditions at a time, if else मतलब एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने के बाद मेरा फिर से और एक कंडीशन चेक होगा. इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, then it will goes to second statement, and if second statement is true, then only which we have written in second that will execute. And if there is error or there is a false statement, then it will not execute the statement which we have written in a second if block. It will execute only the statement which we have written in else statement. second else में जो लिखा होगा वही statement वहां पे जो है execute होंगे, और if में जो होंगे वो skip हो जाएंगे. Then what we will see here, we are using here input output pins. Then we have seen about the data type also. We are using number of data types like wide, integer, unsigned character, byte. We are using word, float. So we have to understand how many bytes or how many bits are stored and which sign. There is a positive sign, then we can call unsigned, and if there is a negative sign, then you can call the name as it is like a integer. मतलब पॉजिटिव भी आ जाएगा, निगेटिव भी. एंड इफ यू आर राइटिंग लाइक अनसाइंड इंटीजर, मतलब क्या होगा, उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे. देन यू हैव टू study about the how much memory these data types can store. Like void keyword is used only at the function declaration. हम क्या करते हैं, जैसे setup लिखते हैं ये प्रोग्राम में, when we are writing setup or when we are writing loop, at that time we are using void setup and void loop. और वहां पे भी जब हम void लिखते हैं, we have to write in a small letter. We cannot write in a capital letter. If you are writing in capital letter, then there will be compiler error. If you using data type as a byte, then byte can store 8 bit. This is nothing but 0 to 255 words it can store. Not a word, 0 to 255 bit. मतलब वो जो है 8 बीट का वैल्यू है. इफ यू आर कैलकुलेटिंग इन द डेसिमल, तो 0 to 255 के जो वैल्यूज रहेंगे. बट in microcontroller, in microprocessor, in the Arduino programming, these are using only binary values. That's why we are calculating these values in a bit. So if you are writing, if you are using byte, then it can store 8-bit value. If you are using integer, then integer can store 2 byte. 2 byte means 16 bit. एक byte मतलब 8 bit होता है. 8 bit मतलब 0 to 255. तो integer जो है 2 byte मतलब 16 bit, मतलब it can store from -32768 to +32767 values. Now we will see about the input and output pins. There are general purpose input output pins are
using in a microprocessor, and these are not dedicated to anything. They are designed for you to do input or a output सिंगल बिट्स मतलब ये जो पिन्स है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं ओनली वी आर यूजिंग दिस पिन टू कंसीडर एज इनपुट और आउटपुट हम क्या कर रहे हैं वो बाकी कोई काम के लिए वी कैन नॉट यूज दिस पिन वी आर यूजिंग दिस पिन टू सेट एज अ इनपुट पोर्ट और अ आउटपुट सिंगल बिट a GPIO. This is nothing but general purpose input output pin. These pins are single bit either a input or a output. Basically, GPIO allows you to connect with real world. They are making the computers to do something in a real world, whether it is a running of switch, it's running on LED. मतलब क्या है जैसे तुम LED पे यदि कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, जैसे ऑर्डिनो बोर्ड पे प्रोग्राम कर रहे हो और ऑर्डिनो बोर्ड को तुमने LED से कनेक्ट किया हुआ है, तो what will you do? You will either close the LED or you will off the LED after some delay. Then what we have to do? We have to select which port of a board is having higher voltage. It means what? Which pin of a Arduino board is having as a input, और इनपुट को जब तुम वैल्यू दोगे तभी तुम्हें आउटपुट में क्या दिखेगा. दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय यूजिंग द इनपुट एंड आउटपुट पिन्स. These pins are not dedicated to do other functions. These are designed only for input or a output. Now we will see how we are giving input and how we are giving output. Actually, the Arduino pins are by default configured as input. So they do not need to declare as input with a pin mode when you are using them as input. हम जो एनालॉग पिन और डिजिटल पिन जो यूज कर रहे हैं, what we have to do, we have to give here इनपुट एंड आउटपुट. वी हैव टू डिसाइड कौन से पिन को हम इनपुट दे रहे हैं, कौन से पिन को हम आउटपुट दे रहे हैं. ये जो ऑर्डिनो बोर्ड है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो पिन्स यूज कर रहे हैं, वी आर डिसाइडिंग टू विच पिन वी आर गिविंग इनपुट एंड टू विच पिन वी आर गिविंग आउटपुट. By default, the Arduino pins are as a input. So there is no need to give any statement for the input. But if you are considering as a output, then you have to use instructions to make that pin as a output. And when you are considering this pin as a output, we can write pin mode. Pin mode, in that you have to write pin by using lower case, and mode में जो है you can write first letter as a capital. यहाँ पे P को तुम capital या फिर E को या O को, if you are writing like this, then there will be compiler error. You have to follow the instructions rule. ये जो pin mode है you have to write as it is. PIN small letter, M जो है capital, again you have to write in a स्मॉल लेटर. और इसमें जो इनपुट रहेगा और जो आउटपुट रहेगा, जो पिन नंबर, उसके साथ वो इनपुट है या आउटपुट, वी हैव टू राइट. आई विल एक्सप्लेन हियर. If we have to configure pins of Atmega as output with a pin mode, then you can assign this pin as output by using pin mode instruction. पिन मोड इंस्ट्रक्शन के साथ तुम क्या कर सकते हो, उसको एज अ आउटपुट यू कैन कंसिडर. Atmega pins can source or sink provide negative current. Atmega pin can source or sink negative current up to 40 milliampere to the other devices. This is enough current light up for the LED. मतलब यहाँ पे जो ऑर्डिनो बोर्ड है, तो मैंने उसमें वोल्टेज का तो एक्सप्लेन किया था कि कुछ जो कंपोनेंट्स है दे आर कंपैटिबल विथ 3 वोल्ट, बट सम आर नॉट कंपैटिबल, दे रिक्वायर मोर देन 3.3 वोल्ट, दे रिक्वायर अप टू 5 वोल्ट voltage. And if you are considering in terms of current, then LED will light up with 40 milliampere current.
So there is need to provide that much current to light up LED, to glow the LED. We can configure this pin as a output by this function. If you are writing like void setup, this is nothing but our main function. Here we have to decide which pin as a input or which pin as a output. In pin mode, pin is nothing but you have to write the number, मतलब pin 4, या फिर you can write here pin 6, pin 8, and mode is nothing but input or output. So pin is the number of pin whose mode you wish to set as input or output. If you are considering as input, there is no need, because by default these pins are considering as input. But if you need to convert this pin as output, then you have to write here pin number 6, mode की जगह तुम लिखोगे output. If you are writing like this, then the pin number 6 will automatically become as a output. जो Arduino board है, इसमें जो pin number 6 रहेगा उसका, that will become directly as a output. और यहाँ पे तुम LED कनेक्ट कर सकते हो. How will you connect? You will connect by using our PCB. PCB के साथ तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे LED लगा के. We will see in our next unit. Next unit में you have to see about the LCD, LED, how we are doing the interfacing, how we are writing the program. So what we are doing? If pins are input, then there is no need to write. But if pins are as output, then we have to set this pin as output by using pin mode functions. And you can set these functions as output by using pin mode function, in which we have to write pin number and you have to write mode as input or output. Input का तुम लिख सकते हो या skip भी कर सकते हो, but for output you have to write. और तुम इनपुट के लिए भी लिख रहे हो तो it will be very good. In digital write function, what we will do here? This command is used to write the status of digital pin. It means what? The pin is having higher output or zero output. मतलब if you are giving 5 volt ampere, 5 volt voltage और 40 milli ampere current, at that time LED will glow. तो इसमें क्या हो जाएगा? We can write digital write pin and value. It means pin number जो है 6 and value high, or you can write 5 volt. If you are writing like this, then that time LED will become glow. And if you are writing digital write pin number 6 low, or you are writing 0 volt, at that time what will happen? That pin will not, that LED will not glow. अब बोलोगे मैम आपने तो बोला इसमें हम तो 0 और 1 यूज करते हैं, आप तो 5 वोल्ट 40 मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं. मैं तुमको ये थियोरेटिकली बता रही हूँ, बट व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोग्राम, एट दैट टाइम यू आर सपोज टू गिव 0 और 1. 0 मीन्स 0 वोल्ट और 1 मीन्स 5 वोल्ट. मतलब बुलियन में जब 1 बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? यू आर गिविंग द हायर अमाउंट ऑफ वैल्यू, higher amount of voltage. So what we are to do? We are supposed to write here these pins are work as input or output by using the digital write function. मतलब these pins जो तुमने इनपुट और आउटपुट डिसाइड करना है, we are using this by using the pin mode function. और हम ये कहाँ कर रहे हैं? We are doing in a preparation block. That why we have to write these things in a void setup. बट हम क्या कर रहे हैं? उसको जो इनपुट दे रहे हैं और उसको जो आउटपुट दे रहे हैं, मतलब जो हमें आउटपुट वहां पे चाहिए है, these are nothing but the execution. So we have to write digital write function in the loop. हमें वो कहाँ लिखना पड़ेगा? लूप में लिखना पड़ेगा, because at that time only your LED will continuously glow and off when your program will execute again and again. At that time you have to write digital write in a while loop function. तुमको ये कहाँ लिखना है? एग्जीक्यूशन में लिखना है. So what we are doing? We are using digital write command to write the status of digital pin. It can make them either high or a low. The pin needs to be output pin. क्यों? क्योंकि हम तो इनपुट जो दे रहे हैं, we will give here and we will decide which pin as output. यहाँ पे हम पिन मोड में
पिन नंबर 4 इनपुट, उसके बाद नेक्स्ट सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट कमांड नीचे के लाइन पे फिर से लिखूंगी पिन मोड 8 ब्रैकेट में एंड आउटपुट। मैं पिन 6 को इनपुट कंसीडर कर रही हूँ, पिन 8 को आउटपुट कंसीडर कर रही हूँ। We are doing input and output pin consideration in the void setup because these things will happen only once at the start of program, at the beginning of program, or either there is a power off and again you are making a power on। मतलब जब तुम रिसेट कर रहे हो, एक तो बोर्ड को रिसेट कर रहे हो या फिर पावर बंद होके फिर से शुरू हो रहा है, at that time void setup function will run once and there will be which pin you are assigning as input, that pin will work as input, और जो तुम पिन को आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं वो प्रोग्राम में लाइफ टाइम के लिए वो आउटपुट बन जाएगी। यू कैन नॉट कंसीडर दैट पिन एज अ input and then you have to give the values। how will you give? We can give the values as to the LED by using the digital write pin। We can give higher value or lower value to the digital pin by using digital write pin। Firstly, we have to consider pin as output by using pin mode function। मतलब void setup में हम एक just example में orally बताते हैं। If we are writing like integer LED equal to 6, मतलब LED is connected to the pin number 6। ये जो हमारा पिन नंबर इसका जो 6 रहेगा, here we will connect the LED। integer 6 equal to integer LED equal to 6, मतलब 6 नंबर के पिन को हम LED कनेक्ट कर देंगे। Then what we will do? We will decide which pin is output because 6 को तो input है या फिर तुम उसको नहीं भी ये करोगे। By default, these pins are input। Void setup in which we will write void setup के बाद you will give parenthesis after curly braces, मतलब program you can write, मतलब at the beginning of program void setup के बाद तुमको curly brace देना है। Then what you will write? You will write pin mode LED output, मतलब you are considering this pin as a output। जो 6 नंबर की पिन को तुमने जो LED कनेक्ट किया है, we are considering this pin, this LED as a output। So you will write pin mode LED output, or you can write pin mode in bracket 6 output, क्योंकि 6 पिन को already you have decided कि यहाँ पे तुमने LED कनेक्ट किया है। Then now we have to do here execution। How will you do? You have to give here higher value or a lower value। How will you give? We can give these values by using our digital write function। But उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? We have to write while loop function, because when you write while loop function, at that time only there will be execution। At that time only execution will become again and again, it will happen, and until you are not resetting the board or until you are not making power off। What we have to write? We will write digital write in bracket LED high, मतलब you are giving LED को high output। Then you can give here delay, सेमीकोलन दोगे तो वहां का उतना एग्जीक्यूशन हो जाएगा। Then you are giving like delay in bracket 500। इट इज नथिंग बट इन मिली सेकेंड। यदि तुम वहां पे ms नहीं भी लिख रहे हो तो यहाँ पे जो करंट होता है दैट विल बी इन मिली एम्पियर, और वहां पे जो ये रहता है डिले वो दैट विल बी मेजर्ड इन अ मिली सेकेंड। तो यू कैन डायरेक्टली राइट डिले इन ब्रैकेट 500 मिली सेकेंड। अगेन इफ यू आर कंसिडरिंग LED टू बी ऑफ, मतलब तुमको कंटिन्यूअसली LED ग्लो और ऑफ करना है, तो फिर तुम फिर से लिखोगे इन नेक्स्ट लाइन यू कैन राइट डिजिटल राइट इन ब्रैकेट LED लो, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा LED ऑफ हो जाएगा। अगेन यू कैन गिव अगेन डिले नेक्स्ट लाइन पे सेमीकोलन के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन में यू कैन गिव डिले राइट इन ब्रैकेट LED लो, उसके बाद तुम जब डिले दोगे डिले इन ब्रैकेट 500, अगेन यू हैव टू गिव वन सेमीकोलन। Then your LED will make glow for 500 millisecond and it will become off for 500 millisecond, and these things will happen continuously if you are not resetting your
board, or you are not making power off. Here our first unit is completed introduction to the Arduino, in which we have seen microprocessor, microcontroller, role of embedded system. We have seen about the open source platform. We have seen about the Arduino hardware. This is nothing but Arduino board. We have seen Arduino IDE, Arduino instruction development environment, where we have to write the program, and we have seen about data time variables which we are using in a programming. We have seen about how to consider the port as an input, how to consider port as an output, how to give input and output. हम यदि उसको इनपुट कंसिडर कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पिन्स होते हैं दैट दिस विल बी इनपुट, बट इफ यू हैव टू कंसिडर दिस एज आउटपुट देन यू हैव टू यूज पिन मोड इन ब्रैकेट द पिन, जो पिन है उसका पोर्ट मतलब पिन नंबर 4, एंड यू कैन राइट आउटपुट. देन व्हाट वी हैव टू गिव इफ यू आर सपोज टू गिविंग higher value or a lower value of potential, you can give by using the digital write instruction. How will you give? in execution जो लूप फंक्शन है उसके अंदर तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो डिजिटल राइट इन ब्रैकेट एलईडी और जो पिन नंबर तुमने असाइन किया था 6 एज आउटपुट, यू कैन डायरेक्टली लाइक डिजिटल राइट इन ब्रैकेट 6 कॉमा हाई, मतलब वो पिन जो है उसको मैक्सिमम वोल्टेज चले जाएगा. उसके बाद तुमको डिले देना है, यू कैन गिव डिले बाय यूजिंग डिले इंस्ट्रक्शन. You are supposed to give time in a bracket. If anyone is facing any issue, you can ask me. Otherwise, we will revise, and after 2 minutes, we will conclude our class. At that, I am taking your attendance. Just wait for a minute. Nowadays, we are using lots of electronic circuits in which we are using microcontroller or a microprocessor, because as there is a advancement in a microcontroller and the cost is becoming less and we are getting lots of sorry lots of features, that's why we are using microcontroller as compared to the microprocessor. And Arduino is an open source platform. It is easy to use with without background of electronics or a programming language. So we are using here Arduino, in which we are studying Arduino board as well as Arduino software. हम इसमें Arduino board भी study कर रहे हैं और Arduino software भी. In Arduino board, there is a microcontroller, there is a USB port. Here we have to connect USB that port to the PC by using USB cable. Here we are giving power supply. हम यहाँ पे Atmega 328 microcontroller use कर रहे हैं. And in Arduino IDE we can write the program by using two functions, setup and loop function. Setup function will execute only once, and after execution will go to the loop function, and loop function will execute it until run lifetime of program. It will execute continuously. Thank you. You guys can leave now.